So, good afternoon and namaste to everyone. My name is Vikas Kumar, and today I am your resource person in this online Sahodaya training hosted by Patliputra Sahodaya on the topic safety during online teaching and learning. So, before we start this session, can you please write in the chat box how many of you have attended any online or offline session on cyber safety and security? Just write yes or no. Okay, that's very good. Many of you have attended sessions on cyber safety and security. Now, please tell me, have you attended any session on artificial intelligence? If yes, yeah, give a thumbs up if yes. Great, great, great. So, my respected teachers, when we attend these sessions on cyber safety and security, when we attend the sessions on artificial intelligence and their importance in the field of education, we feel very happy. We get to know a lot of things that can actually help us in teaching, that can actually help us to make our lesson plans, to make our topics more engaging in a way that students get more and more involved with us and their understanding becomes better day by day. But as we all know, that in this digital world, if we are too much exposed, then we have some threats. We have some threats in this cyber world. So, in a general concept, we have talked to maintain the safety and security in a general life by the topic cyber safety and security itself. But today, we are going to discuss how to be safe during online teaching and learning, because what we see now, what we can say, a trend has been set after the period of COVID, that whenever children are getting a sort of long holidays, schools or any educational institutions, organizations, what they are doing, starting they have started to host online classes, and the resource means the teachers who expose themselves, who expose their devices, their gadgets to fulfill the demand of the students, to fulfill the demand of the institutions, are not fully equipped. So, respected teachers, in this session, we will be discussing about a lot of things which I think will be helpful for you in next online teaching classes. So, stay connected for next 58 to 59 minutes, and we will be discussing a lot of things. Meanwhile, if you have any doubts, we will be having a question answer session just after this session in which you can ask the doubts, and I'll be very thankful to you if you will keep on answering and keep on interacting with me through the chat box. I will be watching your chats throughout the session. So let's start. The very first thing, that is impact of COVID-19. We all have faced this pandemic, and it was a horrific condition. If you can see on the picture, do you see the number of absentees? In our day-to-day life as a teacher, what we do when we go to class, we mark the attendance of students and we write that out of 40 students, 35 are present, 5 are absent, 37 are present, 3 are absent. But this was a period when approximately 168 million students were absent from their classes. And this was the reason why we opted the online classes, because we were the one who have who had the responsibility to bring them back, to connect them,
to the field of education. So schools were shut all across the world. The traditional classrooms were not being operated, and as a result, the education system was changed. It was a dramatic change. And suddenly, we all saw a distinctive rise of online learning, where teaching became something which can be undertaken remotely and on digital platforms. And what we see from that COVID period only, students are also now a bit more interested in online classes than in offline classes. So what we see that there are various studies. If you see on the decorations of this PPT, you will see the toll-free number. You will see the owner of this PPT who have prepared this all PPT, who shared it with us so that we can discuss all these things to you. They have studied a lot, and when isea.gov.in studied, they found that COVID has actually changes a lot of things in the field of education. So what happened in particularly the education sector, the cyberspace increased. What happened, what we see that after COVID, our way to life has changed. We have changed the way, uh, in a way we never used to live. Like if you go to the markets, you will see that in many cities or in many villages, till date, by 9 p.m. or by 10 p.m., the marketplaces are now not that much crowded. Most of the people have returned to their home already. Most of the shops are now closed. People have started considering that no, this is not the time for operating this shop. What used to happen earlier? Many shops used to be operated till midnight. We as customers or consumers, we used to visit market till midnights, but that changed. And not only that changed, many things changed with respect to schools and colleges. Many things changed with respect to the education that they were providing. What happened? In the COVID period, we completely shifted to online teaching. After COVID, we thought we will completely shift back to our traditional classroom, but this never happened. We couldn't do it. Many of us successfully shifted to online classes, but we didn't return back successfully. हमें आज भी अपने बच्चे को वो ऑनलाइन टीचिंग वाले मसाले देने पड़ते हैं so that they feel connected. Because what have happened that for a long period of 2 years they have studied online and they have found it amazing. So teachers as well as students, they started relying on various video conferencing tools, various lesson portals that we see, various websites are there, and the other online tools are also available. Many schools till date are unprepared to securely migrate to completely digital learning experiences. So whenever a school, whenever a educational institution and organization plans that they have to start online learning, they have to start online classes, there are some tips and tricks that they should follow to be safe. Now, there are conferencing apps. One of is WebEx, through which we have joined. We are connected today. Others are Google Meet, Google Classrooms, Zooms, and are many more popular apps which were used to conduct interactive classes in India, and till date they are being used. Now, understand this. If these systems are set up with proper authentication and control, any of them can act as potential vector for an attack. If you haven't done a proper authentication, suppose I have to take a doubt class since the annual examinations are going on, and I, as a teacher, I thought that let me host a doubt class for my students that will help in
their upcoming examination that is going to happen in 1 or 2 days. And I just prepare a link of Google Meet and I share it to the students. Now, students being a child, being having a childish mind, what they can do, they may share that link to their classmates, their fellow mates, maybe some other friends who are not particularly from your school. So what will happen? I am not suggesting that you should not teach someone who is not from your school, but what happens if a child is not from your school? They will not understand the rules and regulations that you follow, that you opt. They will not be able to understand the method of teaching you use. So what will happen? They will simply disrupt your teaching activity. They will disturb the class. So without authentication and without having control, it can attack. It can act as a potential vector. Suppose what happens, you shared the link, someone got that link and shared it to someone who used to hack or crack into the systems. And they used that link to access the data of your system, the data of those who were connected in that webinar. What will happen? So it's very important that authentication and control is very necessary. In addition, tools to access the school networks remotely and remote desktop protocol can be misused. We all see when we all in fact do it. Suppose I am installing a new software and I am having a problem with operating it. So it may happen I connect to the customer service and they tell me to give them the remote desktop access. Now, if I do so, there is a very high chance that they misuse it because when you give the access of your screen, your computer on a remote network, they are completely capable of controlling whatever things that can be done from your gadget, your laptop, your computer. So it can be misused. They can gain unauthorized access to the sensitive systems, to the sensitive data, and many more things. Now, educational institutions face challenges such as threats through using own devices by staffs and students, and also in protecting their sensitive data. Now, there are various reasons of these challenges. The first and foremost reason is the lack of training, the lack of uh, sensitization, the lack of understanding between the students and staff about the confidentiality of the sensitive information. The second thing is mishandling, mishandling of the devices, mishandling of the gadgets, mishandling of the network. And the next can be not being proactively responsible. Okay, someone is saying my voice is cracking. Please confirm if I am clearly audible to all of you. Am I clearly audible to the participants? Okay, thank you. So, Leena Singh, ma'am, please check your network connection. It may happen that you are at somewhere where the network is not very good. So, coming to the next. Now, since we started talking about online learning and we started talking about threats, it's not like there are only disadvantages of online learning. There are various advantages too, and you can see it on the screen. What is this? The very first thing, it is self-paced. Whenever a student opts the online class, why do they opt it? Whenever a student prefers that they will watch a YouTube video to get any topic cleared, why do they do so? Have you ever understand? Try to understand it. The reason is it is self-paced. They can stop it whenever they want.
They can decrease the speed, what we say playback speed, so that the teacher is now writing slowly, the teacher is now speaking very slowly. If I personally have seen many students, many aspirants of NEET and IIT, what they do, they watch videos on YouTube on different topics of their subject, and they increase the playback speed to 1.5. And when I ask, why are you doing so? They say, I do not want to listen to him. So they put the volume down too. They just want the notes that the teacher is writing. उन्हें notes चाहिए बस. So they have increased the speed, they have decreased the volume, and now they are learning. So the first thing is it is self-paced. Next, it is student-centered. See, I am here not advocating about the online coaching institutions, but one thing we all will agree that the coaching institutions, especially the online coachings, what they are doing right now is they are impressing the students. And how are they impressing them? They are impressing them by keeping them at the center. For them, students are everything. If a student says, sir, 5,000 is a big amount, I cannot pay, they decrease the fee by 4,000. Definitely by doing the system, they gain more money, they generate more revenue because more customers get connected, but they are doing it. And they find, the students find it that they are doing it for us. So they are very much attracted toward those teachers or those institutions. Apart from that, when we talk about teaching strategies, I personally have seen various online platforms, online educationalists who use very innovative examples from the real life so that students get to understand the concepts very easily. Now, the third is cost effective. On an average, what we see, if you as a teacher are hosting tuition classes, although it is prohibited by most of the schools of CBSE, but that's what we can say, that's a open secret. We all know, but it's a secret that many teachers used to go for the tuitions. Now, understand this in a very practical manner. Whenever you go to a place, to a student's place for giving him tuitions or giving her tuitions, I think minimum you charge 4,000 to 5,000 depending upon the classes. It can go up to 10,000 also per month. It may be decreased to 2,000 also. So it's pretty costly because this fee has to be given every month. But now, suppose you decided not to travel in the city and go to each house, ring the bell, go and sit there and teach the students, and you decided to start a online class. So what will happen if you were charging 2,000 per month? Now you will charge only 500 per month because you know that in online class you will connect 5 or 10 students. So 500 into 10 will be 5,000. If that number will increase to 100, you will decrease the fee to 5 from 500 to 100 because you are generating more revenue, but it is becoming cost effective for the learners. So students are getting attracted towards the online learning. Now, next, no need to carry heavy bags with textbooks. No worries to go in that harsh weather condition to the schools, to the coaching institutions to study. Student can sit at their place and keep on learning whatever they want to learn. They can enroll themselves in online classes. They can be comfortable in their study room or in their bedroom and study from there only. It is also time efficient, as we all know. Suppose आप ट्यूशन लेने जाते थे, आपको जाने में 20 मिनट लगता था, आपको आने में 20 मिनट लगता था, 1 घंटे आप पढ़ाते थे. So for a 1 hour tuition, you were investing 1 hour 40 minutes. But when you opt to online classes, it's only 1 hour. Like, see my example.
That meeting was from 4 p.m. I joined at 3:59 and I returned from my institution at 3:57. I'm very honest. So 3:57 में मैं आया, 3:59 में मैंने ज्वाइन किया. From 4 I started. At 5 I landed. At 5 or 5:05 I landed. So I'm not investing very much time इन ऑनलाइन क्लास. ऐसा नहीं कि मुझे 1 घंटे पहले से कहीं पहुंचना है, 1 दिन पहले से कहीं पहुंचना है. सपोज आप अभी आई थिंक 2000 और 2500 पार्टिसिपेंट्स होंगे. इतने लोगों के साथ मुझे बात करनी होती. Am I audible to all of you? Just write yes or no or react in this or this. I'll understand. Okay, so thank you, thank you, thank you. So कुछ members हैं, 2-3 comments मैंने अभी पढ़े जो कह रहे हैं that I'm not audible. It may happen, मैं कभी कभार धीरे बोल रहा हूँ, तो हो सकता है मेरी आवाज कभी लो जाए. बट इफ इट इज हैपनिंग टू यू कि मेरी आवाज साफ नहीं जा रही है, आप तक पहुंच ही नहीं रही है, प्लीज रीजॉइन, है ना. एक बार आप इस मीटिंग से बाहर जाएं और फिर दोबारा अंदर आए. इट मे हैपन कनेक्टिविटी इशू हो, नेटवर्क इशू हो और उसके कारण आप सुन नहीं पा रहे होंगे. थैंक यू. लेट्स कंटिन्यू. नाउ environment friendly too. No any requirement of transport facility, no any requirement of the wooden benches, so no trees are getting cut, nothing like that. Then solves the teacher scarcity. Imagine अगर ये वाली सेशन अगेन ऑफलाइन करानी होती, तो अगर आपकी नंबर अभी मान लेते हैं 1800 या 2400, लेट्स कीप इट लाइक दैट. अगर आपकी नंबर अभी 2400 है, 60 इंटू 40 करना पड़ता, तो 40 रिसोर्स पर्सन ढूंढने पड़ते. 40 को अलग अलग जगह पे रिलोकेट करना होता, आपको ले आना होता, और तब जाके ये सेशन हो पाती. बट थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप सभी एक साथ कनेक्टेड है, एक से सॉल्व हो रही है प्रॉब्लम. सो सॉल्व टीचर स्कैसिटी टू. सेल्फ डिसिप्लिन्ड. And now, what is the meaning of self-discipline? Students learn to join it by becoming proactively responsible. Then get education at the comfort of his or her home and even get a online degree. So these are the advantages of online learning. So ऐसा नहीं कि सारी चीजें बुरी ही हैं, ऑनलाइन लर्निंग के एडवांटेजेस भी हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस. Again, it causes social isolation. What happens when a student comes to school or goes to any educational institution, a university, for any degree or course? They socialize themselves. उनके 4-5-10 दोस्त बनते हैं, वो उनके साथ उठते बैठते हैं. They get to know about people, they get to know about society, they get to know about the surrounding, and with this they improve their communication skills. But what happens when a student connects in online classes? They opt online learning. It causes social isolation, then it causes the lack of communication skill, and then it causes lack to face-to-face communication. Means what? It may happen that you can be very good at having conversations. When it comes to having conversation online, आपको chats करनी है, आप काफी अच्छे से chats करोगे, आप काफी अच्छे से punchlines दोगे. But it may happen that when you appear face to face, when you are sitting in front of a person, you are not able to communicate properly. You are not able to put your words properly. You are not able to express yourself properly. So this is the disadvantage of online learning. Now, practical learning will not happen efficiently with limited resources in place. Now, let me show you. Let me tell you the difference. The science teachers can relate. In fact, everyone can relate because हम सभी कभी ना कभी science पढ़ते ही हैं. So what happens when we were students, और स्कूल में आज भी जब हम अपने बच्चों को लैब लेके जाते हैं, what we see, if I am a student, मैं क्या देखता हूँ मैं बताता हूँ. कि अगर मेरे टीचर मुझे लेके जाएंगे साइंस एग्जीबिशन, साइंस लैब में, और उनको एक सिंपल सी रिएक्शन दिखानी है, सोडियम प्लस वाटर इज इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड. The teacher will put on the gloves. He or she will clean the beaker. They will put some water. Then they will very carefully take that piece of sodium from paraffin wax or kerosene. Then they will cut it. They will take a very small piece. They will
इन्फॉर्म ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स कि भाई देख लो, ये सावधानी बरतनी है, थोड़ा पीछे हट जाओ, यू विल सी इवोल्यूशन ऑफ गैस, वो गैस कौन सी है, देन दे विल से कि भाई बीकर गर्म होगा, अभी बहुत सारी चीजें बताते हैं वो, और तब वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं हमें, उसमें कभी आग जलती हुई भी दिख जाती है, कभी हमें वाटर के सरफेस पर सोडियम डांस करता हुआ भी दिख जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वाटर का कंटेंट कितना है और वाटर का सॉरी सोडियम की मात्रा कितनी है। बट व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन लर्निंग, आप देख लेना क्या करते हैं लोग, वो ओपन जगह पे ले जाते हैं, बड़ा सा बर्तन रख देंगे, ढेर सारा पानी रखेंगे, एक बड़ा सा कुछ स्टिक जैसा बनाएंगे, उसमें ढेर सारा सोडियम लेके डाल देंगे, दिखा देंगे कि देख लो भाई, सोडियम पानी में जाता है, ब्लास्ट कर जाता है, आग लग जाती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और जो बन गया है पानी थोड़ा सा बर्तन में बच गया है, वो अब सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कैसे बता देंगे, दे विल परफॉर्म द लिटमस पेपर टेस्ट। नाउ फूट क्या गया, दी एटिकेट्स, दी मैनर्स जो लैब के होने चाहिए, जो कि बच्चे सीखते हैं ऑफलाइन क्लासेस से, वो छूट गई। दी टाइनी पॉइंट्स, जो छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, सोडियम की मात्रा कितनी रखनी थी, वाटर की मात्रा कितनी रखनी थी, बर्तन कितना गर्म हुआ था रिएक्शन जब हुई थी, तो जो गैस निकली उस गैस की स्मेल कैसी थी, क्या वो गैस कंबस्टिबल थी, इनफ्लेमेबल थी, क्या उसमें आग लगती, अगर लगती तो वो किस साउंड के साथ जलती, ये सारी चीजें मिस कर देते हैं। सो दिस इज समथिंग जहां प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं हो पाती। नाउ assessment would not be effective for younger classes, and I think if assessment would not be effective for higher classes also. Why? सपोज मैं लैपटॉप पे कनेक्टेड हूँ, मेरे स्क्रीन पे असेसमेंट आती है, इफ यू विल सी मेरे ठीक बगल में फोन है, एंड मैं फोन पे चाहूँ तो स्क्रीन को क्लोन करके फोन से आंसर देख के लैपटॉप पे सारे आंसर्स मार्क कर सकता हूँ, सो इट कैन बी अ चीटिंग टास्क। सो असेसमेंट की वैल्यू कम हो जाती है, इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, देन द स्टूडेंट फीडबैक इज लिमिटेड। नाउ दैट्स a harsh reality that अगेन ऑफलाइन सेशन होती है, आप 60 लोग होते, आप चाहते आप 60 लोग आके पर्सनली मेरे से मिल सकते थे, पर्सनली आके आप मेरे से बात कर सकते थे, आपकी 1 पॉइंट 2 पॉइंट 5 पॉइंट रिगार्डिंग स्कूल्स, रिगार्डिंग सीबीएसई, रिगार्डिंग पाटलिपुत्रा सहोदया, रिगार्डिंग टीचिंग, रिगार्डिंग लर्निंग, या मेरी ही कोई कंप्लेन की विकास सर देखिए आप ऐसे पढ़ाते नहीं, ये वाली बात मुझे अच्छी नहीं लगती, आप इसको चेंज करें, ये बातें आप मेरे से कर सकते थे। बट नाउ व्हेन अप्रोक्सीमेटली 3000 पार्टिसिपेंट्स आर कनेक्टेड, इट मे हैपेंस कि आपकी कुछ चैट्स ऊपर चले जाए, मैं ना पढ़ पाऊं, इट मे हैपन कि आपने कुछ टाइप करा और उसी वक्त कुछ ऐसे बल्क एसएमएस आने लगे कि आपकी वो टाइप्ड चीजें उधर ही रहेगी, मेरी नजर ही नहीं, या आप ओपनली काफी सारी बातें बोल भी नहीं पाए, सो द फीडबैक इज लिमिटेड, देन radiation from the devices has significant effect on one's health. That's a very true thing, very scientific thing. See, when if we talk about students, students सिर्फ स्क्रीन देख रहे हैं, तो स्टूडेंट्स भी अफेक्टेड हो रहे हैं रेडिएशन से। इफ वी टॉक अबाउट एडुकेटर, राइट नाउ मेरे सामने लैपटॉप है, लैपटॉप की रेडिएशन आ रही है, ठीक बगल में एक स्क्रीन लाइट है, सो आप देख सकते हैं मेरे हाथ पे चमक देख सकते हैं, सो उसकी भी रेडिएशन मेरे फेस पे आ रही है, सो दिस विल डेफिनेटली इफेक्ट इन अ रॉन्ग वे, सो दिस इज ऑल्सो डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। देन अगेन द सिक्योरिटी थ्रेट्स, लर्निंग आवर्स रिड्यूस हो जाती हैं, अटेंशन स्पैन कम हो जाती है, ग्रुप एक्टिविटीज से एक्सपोजर कम हो जाएगा, पहली और दूसरी पॉइंट में ही हमने डिस्कस कर लिया, एंड देन फोकस ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अलॉन्ग विद लर्निंग इज मिनिमाइज्ड। इन ऑफलाइन क्लासेस साइंस टीचर्स प्रोजेक्ट दे देते हैं, साइंस टीचर का प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ नहीं कि 4 दिन बाद सोशल साइंस के टीचर प्रोजेक्ट दे देते हैं, सोशल साइंस का हुआ नहीं कि कंप्यूटर के टीचर आके बोल देते चलो ये वाला कोड करके दिखाओ, वो वाला ऐप डेवलप करके दिखाओ, वो वाला पीपीटी बना के दिखाओ, प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं, काफी सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज स्पोर्ट्स में हो रही है, कल्चरल एक्टिविटीज हो रही हैं, सब कुछ से मिला तो लैंग्वेज लिटरेरी क्लब वो स्टार्ट हो जाते हैं, डिबेट्स हो रहे हैं, ग्रुप डिस्कशंस हो रही हैं, बट व्हेन वी टॉक इन ऑनलाइन क्लासेस ये सारी चीजें काफी हद तक कम हो जाती हैं। नाउ in online learning, so there are a set of security threats when we are exposed in the internet space.
So online learning happens through internet. Every element, including the user, can be a target. Security is the most pressing issue and concern for teachers, students, and learners. So what is happening? The very first thing is virus or malware threat. So in the absence of school-based controls, children may download new applications, tools in their own devices for learning, surfing the websites or assignments, or may unknowingly download virus. See, here we have written that students may do, but it may happen that teachers may also do, to find the resources easily, to get connected in a better way, to learn more, to understand more about the topic. So unknowingly, it may happen that you or the student download virus or malware by clicking on any malicious link on the websites or phishing emails, and you yourself invite the bugs into your system, which can hack and steal your data and do many more things. So online classroom hijacking is also there. So the online class may have intruders who may snoop into the sessions using technological tools and distract the classes by showing some unwanted images, by threatening languages, etc. The attacker can steal personal information like your name, your email ID from the classroom and use it later for his benefit by selling this data. So what are the two things? The first is virus or malware threat. The second is online classroom hijacking. Now, when we talk how to be safe from it, the very first thing, to be safe from virus or malware threat, what you do not have to do, you do not have to keep on installing various unknown apps and softwares. Prevent yourself from clicking on any link about which you do not know and about which you are not very sure. Do not respond to each and every email. Many emails can be phishing, even if they are not put in spam. So clicking on any email and clicking on any link embedded in that email, opening a document from the email from coming from a stranger, which seems suspicious, can invite a virus or malware to your system. Next, online classroom hijacking. Whenever you are connected to any online class, and you are going to present yourself, like in this class you are not going to present yourself, you are a listener, and you will be putting your thoughts through the chat box. But suppose आपको कुछ शेयर करना है, सपोज आपको अनम्यूट करना है खुद को, सपोज आपको अपनी वीडियो शेयर करनी है. So the best way is, before joining the actual session, join a demo session. आप अपनी आईडी से एक डेमो सेशन बना लीजिए, डेमो सेशन को ज्वाइन करिए, check each and every security and safety features of that webinar, learn to use it, and then come to the actual class. And what happens when you do it, कि जब आप आओगे आपको सारे controls के बारे में पता होगा. Suppose someone snoop into your session and they started showing some of your personal images, let's say, which were put on your social media. बच्चे वहां से डाउनलोड करके आपकी क्लास में दिखा रहे हैं. कोई एक बच्चा, कोई एक इंट्रूडर है. Now, if you know about the controls, you will be able to stop it. You will be able to expel and block that particular intruder from the class. But if you are not prepared, you will find yourself compelled to keep watching it and keep getting embarrassed between the whole virtual class. Now, there are security threats. Now, the privacy risk, as we were discussing, they can steal your data and they can sell it online. Now, in online learning, you may be surprised to know that the amount of data that is collected by the school and their software vendors, not only the basic information such as name, email address, but also the biometrics, academic progress, behavioral, and disciplinary medical information, web browsing history, geolocation, IP address of students and teachers, and also common activities. Now let's understand this. आप में से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जिनके स्कूल में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए एक मशीन लगी होगी. So that machine has two ability. It can scan your face and mark the attendance, and
it can scan your fingerprint and mark your attendance. So that machine, that one gadget is having your personal data like your name, your designation, your face ID, your retina scan, and your biometric, your fingerprints. This is one thing. स्कूल में एंटर करते हैं आप, अटेंडेंस बनाते हैं, आप अपना इतना डेटा स्कूल को दे रहे होते हैं. नेक्स्ट, आप अलग अलग जगहों पे आप क्लर्कल सेक्शन में जाते हो, वहां कुछ डेटा देते हो, आप एकेडमिक सेक्शन में जाते हो, वहां कुछ डेटा देते हो, आप एग्जामिनेशन सेक्शन में जाते हैं, वहां कुछ डेटा देते हैं. एंड बाय डूइंग सो you have shared a lot of data to the school, and school have collected a lot of data, and the school is using it. They need it. That's why they have collected it. But the problem is, if the school is not very much aware about the threats, if they are not very much prepared to handle it, it may happen that these documents can get revealed. And when you as a teacher connect to an online class, what I said, the name of the participants, the email ID or the contact number, the IP addresses through which they are connected. Suppose like now Patliputra Sahodaya have hosted the session, so Patliputra Sahodaya के server में मेरी IP address होगी, आप सबकी IP address होगी. Now, if the Patliputra Sahodaya or if the authority has prepared a safety feature, have opted a plan so that all this data remains safe, then it's okay. But if there is any loophole, this data may get leaked, and then it becomes a vulnerability for the users. Now, phishing scams can happen. Simply अगर किसी भी teacher की, administrator की, student की contact information चली जाए, so it becomes very easy to do the phishing scams, and it can be done to anyone. phishing scams teachers के साथ भी हो सकते हैं, administrators के साथ भी हो सकते हैं, students के साथ भी हो सकते हैं. You will be shocked to know, आप चेक करिएगा, आप थोड़ा न्यूज़पेपर को या आप इंटरनेट पे जाइएगा, you will be shocked to know. I was reading on an online article only that a reputed institution of India, not the educational institution, a defense institution, they paid a very huge amount of money to a fake company. So basically, it was a phishing scam, and they got trapped into it. But our group of ethical hackers, they are trying to get the money back, and I think they have got success to some extent. But it may happen. So the very first thing, you do not have to think that मेरे साथ नहीं हो सकता ये, मेरे साथ क्यों होगा? It may happen to you, it may happen to your friend, it may happen to your children, it may happen to your students, it may happen to me as well, it may happen to anyone. So it's better to be aware, it's better to be prepared than ignoring that no, it will not happen. Now, distributed denial of service. What is this? The DDoS, the distributed denial of service attack. What do they do? The attackers take advantage of the online learning, and they target the internal infrastructure element of the institution. They get the VPN, they connect to it, they hack into your email servers, and then they disturb. So while disturbing, they do one thing. They ensure that your service gets denied. Means you will not be able to host the class. You will not be able to continue the class. Then brute force attack. The fraudster try with all possible combinations to know the correct password. So let me tell you, you got one link to connect. I got one link to connect. There was a very tiny change in that link to connect through a webinar. I was having a password and I was having a link of a committee member, a presenter, so that when I join by using the correct information through a correct authenticated email, I get the access to share my screen, I get the access to unmute myself, I get the access to turn on my video, and I get the access to connect with you. Now suppose you got that link, but you didn't get the password. It may happen that some fraudster, they
कीप ऑन ट्राइंग ईच एंड एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन कि भाई देख लेते हैं ट्राई करके, 0 0 0 0 तो नहीं है, 1 2 3 4 तो नहीं है, 5 6 7 9 तो नहीं है, और भी कोई नंबर 3 1 5 6 तो नहीं है, 9 8 6 4 तो नहीं है. They will try each and every possible combinations to hack into the systems, to connect and attack. We have various web series and movies showing this brute force attack, जहां आप देखते हैं जो विलन्स होते हैं या जो एक्टर्स जिनको कहते हैं, वो ट्राई करते हैं हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन को जब तक उनको पासवर्ड ना मिल जाए. जामतारा, अगर आपने वेब सीरीज देखी है, उसके कुछ एपिसोड्स में ये दिखाया गया ब्रूट फोर्स अटैक कैसे किया जाता है. पूरे स्कूल में बच्चों को बिठा देते हैं, पासवर्ड ट्राई करो, पासवर्ड ट्राई करो, जब तक एटीएम का पासवर्ड ना मिल जाए. हर एक कॉम्बिनेशन को वो ट्राई करे, बिकॉज 4 डिजिट का पिन होता है. मैथ्स टीचर्स प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि 4 डिजिट की पिन बनानी है. वी हैव डिजिट्स 0 to 9, कितने पॉसिबल हो सकते हैं, एंड दैट वे वो फाइंड आउट करते थे पासवर्ड्स को, और उसके बाद वो यूज करते हैं. सो दैट टाइप ऑफ अटैक इज ब्रूट फोर्स अटैक, जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी किया जा सकता है. नाउ फ्रॉम वेयर कैन वी गेट मालवेयर? So we can get malware from malicious softwares again. तो फ्री, अननोन जैसी सॉफ्टवेयर्स जो हैं, उनसे हमें बच के रहना होता है. नाउ व्हाट अ malware does, it's a malicious software. It breaches a network through a vulnerability. जहां वीकनेस दिखी वहां से वो ब्रीच करेगा, वो इंटर करेगा. टिपिकली आप एक लिंक पे क्लिक करोगे, ईमेल वगैरह पे हो क्लिक करेंगे, मालवेयर जो है वो इंटर कर जाएगा आपके सिस्टम्स में. देन ये अपना रूप बदलता है, ये अपना रूप बदल के स्पाईवेयर बन सकता है. ना व्हाट अ स्पाईवेयर डज, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करता है, वो बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, बिल्कुल प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा आपके सिस्टम को. व्हाट विल इट डू? इट विल कलेक्ट ईच एंड एवरी डेटा फ्रॉम योर सिस्टम. आप कितने बार चालू करते हैं सिस्टम को, कितनी देर तक चालू करते हैं, क्या क्या करते हैं, कौन सी डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, कौन सी डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, each and everything they will spy. So it's a ware that spies. Then comes the next, ransomware. So ransomware क्या करता है, वो आपके सिस्टम को बंद करता है, inoperable बनाता है, and then the demand for ransom. Then comes the viruses जो कि खुद को recreate करते हैं, फाइल्स को खाते हैं, डेटा को करप्ट करते हैं, और सिस्टम को करप्ट कर देते हैं इवेंचुअली. Worms are again there, they also corrupt the data and they slows down your systems. So when a malware enters, it disrupts certain components and renders systems inoperable. Now, what a virus can do? A virus can delete the existing file, corrupt running applications, corrupt the boot sector of your HDD, replicate files. वो कॉपी कर सकता है, एक ही फाइल की 10 कॉपी, 1000 कॉपी, 10,000, 1 लाख कॉपी बना सकता है, which engage the CPU resources. और CPU resources जब ज्यादा जरूरत से ज्यादा engage होती है तो आपका सिस्टम स्लो डाउन करता है. Now what a computer worm doesn't affect other files. जिस फाइल में लगा वही रहेगा. नेटवर्क कंप्यूटर्स में कॉपी करता है खुद को, स्लो करेगा या ब्लॉक करेगा नेटवर्क ट्रांसमिशंस को, वीकेंड पॉइंट्स को एक्सप्लॉइट करेगा नेटवर्क्स या कंप्यूटर्स के. Then comes the Trojan horse. What is Trojan horse? So Trojan horse is a type of malware which aims at taking control of the victim's computer and stealing data. Now, backdoor Trojan, which enters from backdoor, you will not be able to know about its existence. Then downloader Trojan, while downloading any file, while downloading any software, it will get downloaded into your system. Then info stealer Trojan, it will get into your system and steal info. Then comes the remote access Trojan. Now this is something from which we should be very much aware. So what this Trojan does, it gets into our system, it spread itself into our systems, gains the access, and then gives the access to a remote person, a hacker or a spammer. So now that person will be able to access our device,
Then the DDoS attack Trojan, so denial of service is also done by the Trojan horses. Now, let's talk about Rootkit. So Rootkit is a computer program designed to provide administrative level access to computer or network. So what happens if you see, अगर आपके सिस्टम में एक से ज्यादा यूजर्स हैं तो आप देखते होंगे पहला एडमिन करके आता होगा, फिर दूसरा आपने जिस भी नाम, स्कूल्स में हमें देखते हैं, स्कूल के लैब्स में हमें ये कंप्यूटर्स देखने को मिलते हैं। पहला आपको एक एडमिन दिखता है, फिर स्टूडेंट्स या गेस्ट में दिखते हैं। जनरली स्कूल के कंप्यूटर टीचर्स जो वो बच्चों को गेस्ट या स्टूडेंट्स वाले पे लॉगिन कराते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप उस पर लॉगिन करेंगे ना, आप देखेंगे दैट यू डू नॉट हैव एक्सेस टू सर्टेन फाइल्स। आप उस पे कुछ एडिट करना चाहेंगे, दे विल say you do not have administrator access. Now what this does, this rootkit virus, it gives administrator access to any other party, third party. So a third party will be able to access the administrative things in your system, and if they are able to access those things, they will be able to edit whatever they want. They will be able to change, they will be able to access the log files of your system. So by accessing the log files, they will get to know whatever you are doing, whatever you are looking for, whatever you have stored in your system. So they will get to know about all your good things and all your bad things. So let's talk about mobile device security threats. What happens when we install any app in our system? We blindly give permission to all the apps, and what happens then? These apps silently collects and leak private data for marketing purposes. Take Wi-Fi routers, which are available here and there. What they do, they intercept and create traffics. It may trick the user to open fake websites that may look legitimate, and they can scam you further. And there can be various hidden apps too, which collects passwords, pins, codes, record your screen, control your device remotely, or it may access your mobile banking. So see, what is this? We have put some screenshots here. We are talking about app permission. So सपोज एक सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं, सॉफ्टवेयर का नाम है, ऐप का नाम है सुपर ब्राइट एलईडी टॉर्च, एंड इंस्टॉल होते ही, ओपन होने से पहले वो आपसे परमिशन मांगते हैं। नाउ सी द परमिशन दैट द टॉर्च इज आस्किंग टू यू। डिवाइस एंड ऐप हिस्ट्री, टॉर्च को चाहिए। फोटोज, मीडिया एंड फाइल्स की एक्सेस इसको चाहिए। कैमरा एंड माइक्रोफोन की एक्सेस इसको चाहिए। वाईफाई कनेक्शन की इंफॉर्मेशन इसको चाहिए, एंड डिवाइस आईडी एंड कॉल इंफॉर्मेशन इसको चाहिए। Oh, if you click on accept, आप इस ऐप को ये सारी डेटा कलेक्ट करने की एक्सेस दे देते हैं। नाउ थिंक ऑफ इट, टॉर्च को आपके फोटो, मीडिया एंड फाइल्स की क्या जरूरत है? कैमरा की जरूरत हो सकती है, क्योंकि आपकी फ्लैश लाइट जो है वो कैमरा से रिलेटेड है, तो वी कैन से कि हाँ ठीक है, कैमरा और माइक्रोफोन की जरूरत है। व्हाट इज द नीड ऑफ वाईफाई कनेक्शन टू अ टॉर्च? डिवाइस आईडी की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐप हिस्ट्री क्यों देखनी है भाई टॉर्च को? बट व्हाट वी डू, वी क्लिक ऑन एक्सेप्ट, क्योंकि जल्दी से टॉर्च जला के देखना है हमें। फ्लैश लाइट फ्री, नो परमिशंस। व्हाट इज देयर? वर्जन 3.5 कैन एक्सेस कैमरा एंड माइक्रोफोन, इट इज नीडेड अदर। अब देख लीजिए कैमरा एंड माइक्रोफोन से क्या होता है, आप देखेंगे छोटा छोटा, टेक पिक्चर्स एंड वीडियोस, सो यू आर गिविंग दिस फ्लैश लाइट टू टेक पिक्चर्स एंड वीडियोस, एंड देन अदर वाले में कंट्रोल फ्लैश लाइट। देना किसको था एक्सेस? अदर्स वाले में फ्लैश लाइट कंट्रोल करने का। एक्सेस किसको दे दिया आपने? पिक्चर और वीडियो लेने का। सो आपके फ्रंट कैमरा से आपकी पिक्चर्स और वीडियोस ली जा सकती हैं बिना आपको बताए। लेट्स नो अगला देख लेते हैं, डी यू बैटरी सेवर, बैटरी चार्जर एंड बैटरी लाइफ। अगेन इसको भी डिवाइस एंड ऐप हिस्ट्री चाहिए, आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन चाहिए। बैटरी सेवर को आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? एंड हाउ ऐप which runs by consuming battery will save battery? So
इन ईच एंड एवरी सेशन में हमेशा कहता हूँ, अगर वो सब्जेक्टिव नहीं होती है, कुछ ऐसे टॉपिक्स बोलती है, आई ऑलवेज से वी शुड यूज आवर कॉमन सेंस। ठीक है, अगर हमारे प्ले स्टोर पे कोई ऐसी ऐप है जो वादा करती है कि मुझे इंस्टॉल कर लो, फोन की बैटरी 5 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगी। अंडरस्टैंड दिस। चार्ज तो आपके फोन का अडेप्टर करता है ना, चार्जर और चार्जिंग केबल, दे आर रिस्पॉन्सिबल कि वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, आयन एक्सचेंज कितना हो रहा है आपके फोन की लगी बैटरी में। एक ऐप आकर इन सारी चीजों को बढ़ा नहीं सकता, तो हाउ विल दैट ऐप हेल्प इन गेटिंग द बैटरी फुली चार्ज? सो इस तरीके की फेक एप्स जो हैं वो बस इसीलिए बनी है तो क्या, ताकि वो आपकी डेटा कलेक्ट कर सकें और उस डेटा को वो लीक कर सकें। नाउ व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट कैन बी टेकन? व्हेन योर सिस्टम इज नॉट इन यूज, log it out, shut down. It is always a best practice to back up your work in hard drive. Let me show you. I am sitting at my workspace, so I have a very easy access. मैं अपने आसपास से काफी सारी चीजें आपको दिखा सकता हूँ. I have a backup. So what I do every after a period of time, I keep on taking the backups from my mobile phone, from my system, from my tablet, so that in the case suppose मेरा लैपटॉप हैक हो जाए, मेरा सारा डेटा चोरी हो जाए, मेरा सारा फाइल करप्ट हो जाए, I'll be having the backup so that my work doesn't stops. Next, whenever an update is being asked to you, update your antivirus, update the anti-malware, anti-spyware softwares if your system is asking for it. If there is a browser, ensure that your browser is safe. Keep it updated so that any new malware doesn't attacks on you. Next, keep your computer operating systems updated also, because it helps in protecting your system from malware and ransomware attacks. Now, if we talk about schools and colleges, the school or college administration should host their classes as private. They should keep it logged. They should manually allow or reject the participant to enter or to not enter in the class. So it helps in reducing the unidentified persons in the class. Do not share the session link or unrestricted publicly available social media posts. Means suppose you got the link of this webinar, do not post it on social media. ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप के स्टेटस में जाके लगा देना है, ऐसा नहीं कि उसको फेसबुक की स्टोरी में जाके लगा देना है, because what will happen, it will give access to many persons and some of them might use it in a wrong way. Now, regularly update remote access applications. If you are having remote access application in your phone or in your computer, keep it regularly updated. If the user is using old version of the application, it may happen that some security features may lag, which may lead to malware infections due to vulnerability in the older version. Now, what is Zoom bombing? Let's understand about this also. So let me clarify one thing. When we talk about Zoom bombing, we talk about something related to video conferencing. But the name Zoom bombing is there because the Zoom meeting app got the first mover benefit. पहले वही आया तो उसी की benefit मिल गई. So always require a password for meeting. Always put a password for your meeting. This password should never be shared publicly and should be sent separately from the meeting invitations. Do not share meeting links on social media. As I said to you earlier, use the waiting room feature in your meetings and verify all attendees one by one before granting access. So read the name. If you identify, if you know that yes, you have invited that person to attend the meeting, allow them in. If not, remove them. Change your screen sharing settings to host only. So it will ensure that the host, the co-host or the presenter only shares the screen, which will prevent the trolls from accessing your video calls. You can either change this in your pre-meeting settings. आप इसको प्री मीटिंग सेटिंग्स से चेंज कर सकते हैं या फिर आप इसको इन कॉल एडमिन सेटिंग से जाकर शेयर स्क्रीन एडवांस शेयरिंग स्क्रीन से जाकर भी चेंज कर सकते हैं. रवि कुमार मिश्रा सर, आई एम रीडिंग योर क्वेश्चन बट जस्ट वेट फॉर 1 or 2 minutes. I'll be there to answer your question.
Disable join before host. This is a very important thing. If you enable join before host, what will happen? Suppose I I created a link for a meeting that is going to happen at 8 p.m. today, and I forgot to click on join before host and I shared the link. Now it may happen कि कुछ लोग 6 बजे ही ज्वाइन कर लें, आपस में लड़ाई झगड़ा कर लिया, मीटिंग के सारे मूड को चेंज कर दिया उन्होंने, many more things they can do. So disable the join before host. वो आए, वो वेट करे जैसे आपके साथ हुआ होगा when you came, है ना, स्क्रीन पे आता है that we have informed the host that you are waiting. The host will join, then the host will allow you to enter. Then enable co-host. So you can assign a co-facilitator to help you moderate. What will happen? Suppose मैं connected हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं ही host हूँ, co-host मैंने नहीं बना रखा है, मेरे यहाँ अचानक नेटवर्क सर्ज होता है, नेटवर्क फेलियर होता है. Now the control is lost. In that case, the co-host helps क्योंकि सारा control shift होता है. Now they can control. So enable a co-host. Enable co-host setting. Disable file transfer. If the option is available, disable it. ताकि फाइल ट्रांसफर्स ना हो. रिमूव्ड पार्टिसिपेंट्स को रिजॉइन, अगर आपने रिमूव किया क्यों ही रिजॉइन कराना है, सो डिसेबल दैट आल्सो. जिसको एक्सपेल किया वो एक्सपेल्ड ही रहे, वो वापस ना आए. ठीक है. देन अगेन पर्सनल ईमेल एड्रेस को यूज नहीं करना है फॉर रजिस्टरिंग यूजिंग जूम और एनी public video calls. So that should be your professional email. No confidential or sensitive or personally identifiable university information should be discussed or displayed. If something is private, we should keep it private. आप उसको वीडियो कॉन्फ्रेंस में शेयर कर रहे हैं और सोच रहे कि ये प्राइवेट है, या वीडियो कॉन्फ्रेंस में शेयर करके बोलते कि सर देखिए प्लीज ये वाली जो स्लाइड है ना ये कॉन्फिडेंशियल, इसको प्लीज किसी को मत बताइएगा. दैट कैन बी कॉल्ड अ स्टेटमेंट ऑफ पुलिस. तो अगर कॉन्फिडेंशियल है, लेट्स कीप इट कॉन्फिडेंशियल, उसको शेयर ही नहीं करना है कहीं. नाउ मोबाइल सिक्योरिटी मेजर्स, आप जरा यहाँ देखिए ऐप परमिशंस. ठीक है. बॉडी सेंसर्स की परमिशन 3 ऑफ 3 एप्स को अलाउड है. कैलेंडर की परमिशन 10 में से 8 एप्स को अलाउड है. कैमरा की परमिशन 28 में से 14 एप्स को अलाउड है. कॉन्टैक्ट की परमिशन 19 एप्स को अलाउड है. लोकेशन की परमिशन 33 एप्स को अलाउड है. माइक्रोफोन की परमिशन 14 एप्स को अलाउड है. फोन की परमिशन 12 एप्स को अलाउड है. इफ यू विल सी दिस पर्टिकुलर परमिशंस वाली पिक्चर को आप देखेंगे. सो परमिशंस आप कौन कौन सी दे रहे हैं, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मैं इस पे रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज ये ध्यान देने वाली चीज है कि आपने परमिशन किसको किसको दे रखा है, किस किस चीज की परमिशन दे रखी है. लाइक आप कैलेंडर की परमिशन दे रहे हैं जोमेटो को, व्हाट इज द नीड. जोमेटो को कैलेंडर की परमिशन क्यों दूं मैं. हाँ, जोमेटो को लोकेशन की परमिशन दूंगा क्योंकि डिलीवरी पार्टनर को मेरे घर तक सामान पहुंचाना है. मैं वेबएक्स को या मैं अपने जीमेल को कैलेंडर की परमिशन दूंगा क्योंकि जीमेल से जब लिंक आएगा तो वो मेरे कैलेंडर पर शो करेगा कि हाँ भाई आपकी एक मीटिंग है, आज अटेंड कर लेना प्लीज. बट मैं अपने फोन को कैलेंडर की एक्सेस क्यों दूं. सो दैट वी हैव टू थिंक वेरी माइंडफुली कि आपने जो ऐप इंस्टॉल किया, वो ऐप जो परमिशन मांग रहा है वो उस परमिशन की उसको रिक्वायरमेंट है क्या. इफ नॉट, डू नॉट गिव इट. नाउ डिसेबल ब्लूटूथ ऑडियो डिस्कवरी, है ना. ब्लूटूथ हमेशा ऑन है अगर आपका, तो ऑडियो डिस्कवरी ऑफ करके रखिए. ऐसा नहीं कि किसी भी रैंडम ऑडियो डिवाइस के साथ कनेक्ट होकर ऑडियो वो वहां शेयर करने लगे. दैट शुड बी वेरी क्लियर. इफ यू सी, मेरे कान में एक माइक्रोफोन लगा हुआ है and it is connected to my laptop, and it is having a button which enables or disables it to connect with that laptop. Choose it. मुझे अभी बात करना है, मैंने किया, अभी 5 मिनट में मैं खत्म करूंगा, मैं इसको क्लिक कर दूंगा, लैपटॉप के साथ ये कनेक्ट नहीं होगा. सो इट शुड बी डन. टर्न ऑफ ऑटो कनेक्ट फॉर वायरलेस कनेक्शंस, है ना. हम लोग दे के रखते हैं, वाईफाई को दे सकते हैं ऑटो रिकनेक्ट. वाई, एक टैप ही तो करना है ना. आप एक टैप करेंगे तो आप माइंडफुली सोच के करेंगे कि आपको जरूरत है कि नहीं. सो वो ऑटो रिकनेक्ट वाले को ऑफ करके रखें. If your mobile device supports these features, use fingerprint security और visual face authentication. बार बार पासवर्ड्स और पिन से ज्यादा अच्छे हैं ये. Make sure you have latest version of all apps and operating systems.
इंस्टॉल ऑल अपडेट्स आपके फोन में, आपके पीसी में, या आपके किसी भी दूसरे डिजिटल गैजेट में. As soon as the update is being asked, please update it, because that is very important. So I think this was the complete lecture part from my side, and now I have opened the chat box, and I will request you all to write whatever you want to ask. I'm here. I'll try to answer as much as I can. See, if you're allowing 5 or 6 apps, what I said, be mindful. अगर आपको लगता है कि आप जो परमिशंस दे रहे हैं उस ऐप को एक्चुअली उसकी नीड है, तो दे दीजिए. दैट्स ओके. इफ इट इज नॉट नीडेड, डू नॉट गिव इट. सर, हाउ कैन आई जनरेट सर्टिफिकेट फॉर मीटिंग्स? पाटलिपुत्र सहोदया, the STMC of school, they will help you, है ना. मोबाइल डजंट नीड एंटीवायरस. आप किसी भी कंपनी का फोन यूज करते हैं, उसमें बाय डिफॉल्ट एक कैचअप क्लीनर होता है, और बाकी सारी चीजें वो अननेसेसरी फाइल्स ऑटोमेटिकली फोन डिलीट करता है. सो जस्ट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू सेटिंग्स, फाइंड आउट कि वो कहाँ है आपके फोन में, और उसको इनेबल कर देना है. एडिशनली आपको एंटीवायरस की जरूरत ना तो आपके लैपटॉप्स में है, जो अपडेटेड लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स है उनमें. मींस अगर आप लाइसेंस वाली विंडोज 10 लाइसेंस विंडो 11 यूज कर रहे हैं, उसको आपने अपडेट करके रखा है अच्छे से, तो वहां भी एंटीवायरस की जरूरत नहीं पड़ती है. मोबाइल में भी नहीं पड़ती है. इफ इट इज नॉट अपडेटेड, आपको एक एंटीवायरस रखना पड़ेगा, जो कि एक एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा लैपटॉप्स और पीसीज में, मोबाइल में नहीं. जी सर, अगर आपने कैमरा का एक्सेस दिया है किसी भी चीज को, तो वो कभी भी कैमरा को यूज कर सकता है. इट शुड बी वेरी क्लियर. अगर मैंने कैमरा का एक्सेस दिया तो ये कर सकता है. इसीलिए आप देखते हैं लैपटॉप्स पे ना इस तरीके से शटर्स आते हैं. मैंने अभी अपना कैमरा ऑफ नहीं किया, मैंने बस कैमरा का शटर ऑफ कर दिया है ना. तो अब क्या होगा कि अगर कैमरा बिना मुझे बताए अगर कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश भी करेगा, तो शटर के कारण वो ऑफ रहेगा. सो इट मे हैपन. सम एप्स डजंट ओपन विदाउट गिविंग परमिशन, फाइंड एन अल्टरनेटिव ऐप, है ना. बहुत सारे हैं. उस ऐप को कहिए तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही. लाखों हैं इस दुनिया में हंसी, कोई ना कोई तो मिल जाएगा. सर मैंने आंसर दे दिया. सुशीला कुमारी मैम, मैंने आंसर दे दिया. पल्लवी गुल मैम, मैंने आपके क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया मैंने. चेंज कर दीजिए आपको. इफ इट इज नॉट वर्किंग विदाउट परमिशन और आपको लगता है ये परमिशन इररिलेवेंट है, चेंज कर दीजिए, या फिर एक बार पता करिए, मे बी रिलेवेंट हो, आपको पता ना हो. देयर कैन बी टू एस्पेक्ट्स ऑफ एवरीथिंग. बेस्ट एंटीवायरस इज विंडो डिफेंडर. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. अगर आपने अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करके रखा है, विंडो डिफेंडर इज द बेस्ट. बट अगर आपके विंडोज ही अपडेट नहीं है, देन विंडो डिफेंडर कैन डू नथिंग. All other antivirus softwares have malware. सर ऐप की जरूरत क्या है? अगर आपको लगता है कि मेरे फोन का कैमरा जो है वो आपने गलती से किसी ऐप को परमिशन दे दी और वो यूज कर रहा है, सिम्टम्स तो करनी होती है हमें. आपकी बैटरी जल्दी जल्दी ड्रेन हो रही होगी आपके फोन की, लैपटॉप की, है ना. फोन जनरली गर्म हो रह रहा होगा जब आप उसको यूज नहीं भी कर रहे होंगे. सो तो अगर ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं, आप उसको फॉर्मेट करवा लीजिए, रिबूट करा लीजिए सिस्टम को, है ना. द प्रॉब्लम विल गेट सॉल्व्ड. ठीक है, ऐसा कोई ऐप नहीं है. अगेन, आप एक ऐप की चोरी बंद करने के लिए दूसरे ऐप को लगाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है. दोनों ऐप आपस में मिली भगत कर लेंगे. Okay, so thank you very much. It was very nice to connect with you all. Thank you very much for listening to me so patiently and being
so active in this whole discussion. I hope we will join again soon, hopefully in the next academic session. Till then, all the best for the results of your students in annual examination. Best of luck for your upcoming academic sessions. Thank you. This was Vikas Kumar hosting the session on online safety while teaching.